Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I am Fazal Sarang. By profession, I am an architect. My question is to Mr. Dr. Zakir Naik. Is the non-veg or non-vegetarian food is the only reason for the heart disease? The brother asked a very good question. That is non-veg the only reason for the heart disease? And this was spoken by Mr. Zaveri, that flesh, animal flesh, chicken, mutton, beef causes heart disease. It can cause, he's right. And he further said, there is not a single vegetable source which contains cholesterol. If you tell that to any doctor, not the ideological vegetarian, they'll agree. Heart disease is caused when the diet contains more fat and more cholesterol, irrespective whether it is veg or non-veg. Irrespective. Non-veg foods do contain high cholesterol, but even vegetable foods, groundnut oil, cashew nut, coconut, ghee, butter, all this, even a common housewife knows. You know why? There are ads in the media. Have Alfalah oil, will not cause heart disease. Indicating the other oils cause heart disease. Simple. You don't have to be a doctor. It's a blatant 100% falsehood. I, being a medical doctor, I challenge Mr. Rashmi Adavi to answer, does butter contain fat or not? And the doctors do tell the people suffering from heart disease, don't have fat, don't have butter, don't have groundnut oil, don't have cashew nut oil. So where did he get this idea from? From these books. This book he gave to me. Correct? This book you gave to my brother. Who gave? Mr. Saleja. Mr. Saleja gave this book. In this book also it is mentioned the same thing, that there is no cholesterol in vegetables. I'm sorry if I thought, because the first time I'm meeting Mr. Zaveri here, if he didn't give these books, I apologize. But one thing, that all these books are published by Jain organizations and distributed in Bombay, cheap. Yes, I'm not blaming. I don't want to hurt anyone's feeling. Let us not have a dialogue across this thing. I'm not going to hurt anyone's feeling. I'm sorry, I didn't want to say that, but I was compelled. I don't want. If it's not, you said not written by Jain, it's not written. No, you said, Dr. Zakir, that I should reply. You will have a chance in your question answer time. Sir, I'll allow you time. In your time, you can respond back. No, I'll allow you to respond back anything you want in your time. And I request the chairman to give me half minute more. I will disturb half minute more. No, he's too smart. We'll not give him half minute more. See, because so many allegations, egg. He told egg is the cause. Egg does contain cholesterol. It's rich in cholesterol. But it's not the major cause. Today's research and medical books also say that the cholesterol in the egg is not the major villain. It is the saturated fat in which you fry the egg. Butter, ghee, lard, which is the main villain. If you don't have this frying in ghee, butter, there are less chances of having ischemic heart disease by egg. And today, amongst the population, 2/3 of the population are non-responders to cholesterol. The moment there's high intake of cholesterol, like taking egg, the liver immediately cuts its own production. And the level that reaches the blood is the same. There are 1/3 people who are responders to cholesterol. They have a problem. They should abstain from yolk of the egg. Otherwise, even if you have 1 or 2 eggs a day, you will not have heart diseases. And if you have it with bacon, with pork, then the problem. If you fry in ghee, you'll have a problem. If you fry in groundnut oil, you'll have a problem. Causing baldness. I don't want to give examples. Even if you check here, there are many people who are bald. There are great philosophers who are bald. I don't want to take their names. I don't want to hurt your feelings. So this thing is just a research which is based on illogical assumption. A research should be practical. And the associate factor for heart disease is also alcohol as well as smoking. These two are also one of the associate causes for heart diseases. Yes, in America, heart diseases are more in non-veg because they have fats. Quran says don't have an excess, this problem will be solved. Secondly, the vegetarians of America, they are fluent. It's a vogue to be a vegetarian because to buy veg food is expensive. If you turn Mercedes car, you have status. If you have veg food, it is status there. About 3 to 7% are vegetarian in America. Less than 1% are pure vegetarian. Less than 1%. Because they are fluent and they are rich, they take more care of hygiene. And many vegetarians ideologically, also, like even Mr. Rashmi Zaveri may agree, that alcohol is prohibited, smoking is prohibited. Because of associated factors, the case of heart disease in vegetarian is less. But anyone who has food which is rich in cholesterol or fat, irrespective whether it is veg or non-veg, he will have heart disease.
To prevent it, follow the guidance in the Quran, in Surah Taha, chapter number 20, verse number 81, that do not commit excesses. That reminds me of a story. In school we had learned that there was a religious priest who ate excessive food, and he had 64 laddus, and when he came back, his wife said that, why don't you have Furan Chutki, some digestive? So he says, अरे बावली अकल नाई बन के 6 बच्चों की माता, अगर चूरन चुटकी के लिए जगह होती तो मैं 2 लड्डू और ना भोग लेता। जी खुशामदीद दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपने पूरी देखी होगी और आपको पसंद भी आई होगी। देखो, अल्लाह ताला ने इंसान को ज़िंदगी दी तो ज़िंदगी के साथ अल्लाह ताला ने इंसान को सेहत भी दी है। अगर आपके आज़ा कामिल है, अगर आपके हाथ पाँव सही सलामत है, अगर आपका दिल सही सलामत है, आप आसानी से किसी चीज़ को उठा सकते हैं, आसानी से किसी चीज़ को आप खा सकते हैं, पी सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, तो आप यकीन माने कि आप दुनिया के करोड़पति आदमियों में से एक करोड़ भी नहीं बल्कि आप दुनिया के सबसे मालदार तरीन आदमी हो, अगर आपकी सेहत बराबर है। इसकी कदर आप, सेहत की कदर आप उससे पूछो कि जो कि मल्टी बिलियनियर मिलियनियर हो और $1 बिलियन उसके साथ हो, लेकिन उसके फेफड़ों ने काम करना छोड़ दिया, उसके किडनी ने काम करना छोड़ दिया, उसके हार्ट ने काम करना छोड़ दिया, उसको ब्रेन ट्यूमर लग गई, उसके हाथ जो है ना पैरालाइज हो गई। उनसे आप पूछो कि रुपए की कदर सेहत के मुकाबले में क्या है। मेरे भाइयों दोस्तों, अगर आपकी सेहत बराबर है, आपको हर एक चीज़ टाइम टू टाइम मिल रही है, तो आपसे बड़ा मालदार तरीन आदमी कोई दुनिया में नहीं। ये बात आप याद रखें। ये बात मैंने इसलिए की कि लड़की ने, यहाँ पर जो लड़का है उसने सवाल किया है कि सिर्फ गोश्त खाने से ही दिल की बीमारियाँ बढ़ जाती है, तो ये बात बिल्कुल गलत है। नहीं, गोश्त के अलावा भी ऐसे बहुत से चीज़ें पाई जाती है जिनसे आपको दिल की बीमारियाँ हो सकती है। वही चीज़ जिसमें कोलेस्ट्रॉल और जिसमें फैट ज़्यादा हो, वही चीज़ आपको दिल की बीमारियाँ बढ़ाएगी। मिसाल के तौर पर अगर आप देखें, अभी बादाम का जो ऑयल है वो कितना ज़्यादा लिक्विड होता है, इसी तरह जितने ज़्यादा ये वनस्पति घी जिससे बनता है, मटर जिससे बनता है, बटर जो हम दूध से जो निकलता है वो कितना ज़्यादा वो होता है। तो ये बात बिल्कुल गलत है। ये हिंदुओं का अकीदा है कि वो गोश्त को बिल्कुल की नहीं खाते, ना ही उसको पसंद करते हैं, तो वो इसको एक जवाज़ बनाते हैं कि गोश्त खाने से जो है ना आपकी दिल की बीमारियां बढ़ेगी और आपको ये नुकसान होगा, आपको वो नुकसान होगा। तो ये सारी फजूल किस्म की बातें हैं। आपने वीडियो में देखा डॉक्टर जाकिर नाइक ने बहुत बेहतरीन जवाब दिया कि सिर्फ़ और सिर्फ गोश्त खाने से आपको दिल की बीमारी, अगर आप गोश्त ना भी खाएं तब भी आपको दिल की बीमारी लग सकती है, क्योंकि आप घी इस्तेमाल करते हैं, आप बटर इस्तेमाल करते हैं, आप प्रोटीन इस्तेमाल करते हैं, वगैरह वगैरह। तो ये सब चीज़ें मिलकर आपकी सेहत, हर एक चीज़ जो आपके अंदाजे से ज़्यादा हो जाए वो आपके लिए नुकसान है। अगर आप दूध पीते हैं, हद से ज़्यादा पियोगे, आपके लिए नुकसान है। पानी हद से ज़्यादा पियोगे, नुकसान है। गोश्त अगर आप हद से ज़्यादा खाओगे, आपके लिए नुकसान है। तो हर एक चीज़ अगर एक ख़ास मकदार में आप लेते तो आपके लिए ठीक है, वरना अगर हद से ज़्यादा बढ़ जाएंगी तो ये आपके लिए नुकसान ही होगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।